हेलो गाइस वेलकम बैक टू नॉलेज पूल आमे लुसेंट रो सीरीज गुडाको एबे स्टार्ट करछंती जोटार कि सेकंड फेज हमर ऑलरेडी चलीची एवं तार फर्स्ट फेज रे कंप्यूटर रो सेक्शन टा मु कंप्लीट करथिली एमसीक्यूज पार्ट टा नाउ एबे हमर अछि पॉलिटिकल साइंस पार्ट रो आमे आसी फंडामेंटल राइट्स जाय कंप्लीट करि दैछंती द चैप्टर टा हमर होची chapter which is let me see chapter 9 fundamental right chapter 9 already हमें complete कर सारे now हमें बेसी देरी न करी directive principles of state policies रो क्वेश्चन आंसर करिया पूर्वरु किछि गोटे तार ओवरऑल थ्योरी देखि नबा हल्का फुल्का सो दैट हमको कहबा ना इजी हबो करिया पई क्वेश्चन एंड आंसर्स सो बेसी किछि देरी न करी हमें किछि हल्का फुल्का क्वेश्चन हमर तार जो जतिक रहिला थ्योरी पार्ट को किछि देखि नबा सो दैट क्वेश्चन आंसर रे रिवीजन सॉर्ट ऑफ हमर ओटे हेइ जेबो एंड हमको टिके हेल्पफुल भी हबो नाउ डिरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स पॉलिसी देखिबा जोटा कि हमर कॉन्स्टिट्यूशन रो पार्ट 4 रे अछि ओके पार्ट 4 रे अछि हमर फंडामेंटल राइट्स ता थिला पार्ट 3 रे एटा पार्ट 4 रे अछि आ गोटे कथा मु कहि दउची जदी काहाको भी प्लेलिस्ट दरकार सेटा हमर कमेंट सेक्शन रे ऑलरेडी आई मीन सॉरी डिस्क्रिप्टिव बॉक्स रे मु मेंशन कर देची अदरवाइज हमर एई वीडियो रो एंड रे भी अपन माने पाई जाई परिबे हमर प्लेलिस्ट उठाको सो जाइकी डेफिनेटली चेक कर नेबे बिकॉज कोन पई इंपोर्टेंट तो कहि भी देची रिपीटेड टाइम्स ए बुक टा बहुत इंपोर्टेंट सो प्लीज गो केयरफुली एंड वॉच ऑल दोस वीडियोस anyways now directive principles of state policies टा हमर पार्ट 4 रे अछि आ एटा कोन करे ना हमर एटा हमर आसी जाउची हमर सोशल एंड इकोनॉमिक बेस ऑफ जेन्युइन डेमोक्रेसी जेटा कि हमको प्रोवाइड करे ओके सोशल एंड इकोनॉमिक बेस ऑफ जेन्युइन डेमोक्रेसी नाउ डिरेक्टिव इंपोर्टेंट डिरेक्टिव प्रिंसिपल्स गुडा कोन थ्री टाइप्स अछि हमर डिरेक्टिव प्रिंसिपल्स प्रोवाइडिंग सोशल इकोनॉमिक एंड जस्टिस एंड कौन अजरिंग इन ए वेलफेयर स्टेट गोटे वेलफेयर स्टेट करिया पई हमको कोन पई दरकार जोटा कि तीनटा पॉइंट रे हमें देखिबा ओके नाउ फर्स्ट होची सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स सेटा कोन एटा कोन करे ना टू प्रोवाइड करे हमको मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू ऑल सिटीजन्स टू प्रिवेंट concentration of wealth and means of production and ensure equitable distribution of wealth and material equal distribution करे resources आउ हमर wealth को then to secure equal pay to equal work equal जी जेति की काम करिवो भाई ताकू सेति की पैसा मिलियो दरकार बोली एटा कहे as well as women also okay to ensure a decent standard of living एटा हमर तयारी करिया को हेल्प करे to provide necessary opportunities and facilities to child जेति की दरकार opportunity necessary opportunity जहाँ भी गोटे छुआ को दरकार सेटा प्रोवाइड करे and youth to prevent their exploitation तांको exploit हबारु भी एटा prevent कराए and to make effort to secure the right to work education and public assistance okay in case of unemployment sickness and हमको basically हमर अधिकार टा दवा पई से हेल्प करे किए करे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज नाउ गांधीयन प्रिंसिपल फर्स्ट हमें देखिले सोशल इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स पार्ट माने पॉइंट 1 नाउ पॉइंट 2 होची गांधीयन प्रिंसिपल कौन कौन दे आर द एम्बॉडीमेंट ऑफ द गांधीयन प्रोग्राम फॉर रिकंस्ट्रक्शन दिस include कौन include करे the establishment of village panchayat established to function as units of self government to the promotion of education and economic interest of weaker section रो education and economic interest को सेटा promote करे cottage industry को prohibit करे of prohibition of intoxicating drugs and drinks and prevent करे कौन the slaughter of calves and other milch cattle सला cattle मान का जो slaughtering जोटा हो जरा को prevent करे आउ थर्ड पॉइंट देची लिबरल प्रिंसिपल ओके लिबरल प्रिंसिपल कौन एटा हमर कौन करे on liberal thinking and emphasize the need for कौन uniform civil code for country okay free and compulsory education for all children up to the age of 14 तापर सेपरेशन ऑफ द जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव रो पावर टा केमती सेपरेट हबो तापर हमर देइची
organization of agriculture and animal husbandry along scientific lines, securing the participation of workers in the management of the industry ହେଲା ତାଙ୍କର ଯୋଉ participation ଗୋଟେ worker ର ତାର କେମିତି ଆମର participation ଟାକୁ securing the participation of workers in the management of industries ହେଲା industry management ରେ ଗୋଟେ worker participation କୁ କେମିତି secure କରାଯିବ ତାପରେ safeguarding the forest and wildlife of the country, protecting monuments and place for artists or historical importance, the real significance of directive principle एगुड़ा सब आम देखदेले पॉइंट गुड़ा तीनटा पॉइंट फर्स्ट आमर जानी गले सोशियो इकोनॉमिक ओके सोशियो इकोनॉमिक आमर प्रिंसिपल्स देन गांधीयन प्रिंसिपल थर्ड पॉइंट होचे आमर लिबरल प्रिंसिपल ओके এটা বেসিক্যালি কোন সোশ্যাল এন্ড ইকোনমিক ডেমোক্রেসি ইন দ্য কান্ট্রি without which political democracy is a farce মানে কোন এটা কোন हमको प्रोवाइड करले सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी गोटे कंट्री रे बजाय रखिया पे এটা हेल्प करे तापरे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ फंडामेंटल राइट भीतर डिफरेंस ता हमें देख देबा कोन देछि हमरो fundamental right कौन करे ना constitute limitation upon state action while the directive principles are instruments of instructions to the government को सेटा instruct करे एटा एटा तमे लोक मानन पई करबा दरकार बोली ओके किंतु फंडामेंटल राइट कोन हमको आमे कोन करिया दरकार माने लोक माने कोन करिया दरकार सेटा कहे बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स गवर्नमेंट को कहे लोक मानन पई तमे कोन कोन करिया दरकार तापर देखो द माने सॉरी फंडामेंटल राइट आम अधिकारटा हमको दिए बेसिकली एक्चुअली आम अधिकारटा एटा आमे कोन कोन या पाइबा दरकार एटा सेटा किंतु डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ता कोन करे गवर्नमेंट को कोन दिए प्रोवाइड करे कि गोटे वेलफेयर स्टेट क्रिएट करिया पई माने गोटे लोकर माने अधिकार तो गोटे पार्ट रहिला फंडामेंटल राइट्स बट एटा कोन करे माने गोटे वेलफेयर स्टेट करिया पई गोटे छोट छोट जिंस ओडा मिस हो जाईची या नथिला फंडामेंटल राइट रे सेटा को बजाय कला जेमति कि हमर रहिला जेमति एटा एटा आसी गला सपोज एटी देखिनियो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पई गोटे विषय रे किछ गोटे कुहा गला सेटा देखि देले हमें जुडिशियल रिव्यू गोटे छोट छुआ मानन पई केन पाठ पढाटा कंपलसरी रहि परिबो सेटा गोटे देखले बट कोन सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी क्रिएट कला वेलफेयर स्टेट क्रिएट कला ना बुझेला तापर द directives required the implementation by legislation while fundamental right legislator माने जे हमको रूल करूचंदी से मानन को पई सेटा implemented while fundamental right are already provided in the constitution sta already उटे constitution रे provide हे जाइथिला but directive principle टा कोन कला कि हमरो legislature ऊपरे माने इम्प्लीमेंट कला कि तमे माने लोक मानन पई ही करबो कि सोसाइटी पई एटा करबो कि जहाबी ओके Directive principles are not enforceable in the court. In court enforceable nuhe and do not create any judicial rights in favor of the individuals. While the fundamental rights hochi gote enforceable by the court. Okay, fundamental right ra khanana hel tame direct court ku jai paribo. Kintu amare directive principles are enforceable in the court nuhe. Okay, now in case of any conflict between fundamental right and directive principle, the former should prevail in the court. हैला माने कौन फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी थे जोटा कि हमरो जोटा भी हमरो कॉन्फ्लिक्ट हेले हम फंडामेंटल राइट को इंपोर्टेंस ता दबा नाउ 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे ensures the thought the directive principles are not directly enforceable. It would be totally immune for unconstitutionality on the ground of contravention of the fundamental rights. माने fundamental right को important देला माने आर्टिकल 14 और 19 बुझिला आर्टिकल माने 42nd अमेंडमेंट रे एटा हम जानि गेले कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ता हैला किंतु जदि सेटा हमर फंडामेंटल राइट को कोनोसी मात्रा रे किछि गोटे प्रभाव पको देन फंडामेंटल राइट शुड बी माने ताको इंपोर्टेंस ता दबा नि दरकार the attempt to confer a primacy upon the directive principle the fundamental rights was foiled by the decision of the Supreme Court in Minerva Miles case to the effect that law would be protected by Article 31st only if it has been made to implement the directive principle Article 39b and not any of the directive principle included in the part 14. Okay. Directives provided outside part 4 of the constitution con outside state and every other authority with the state to provide adequate facilities for instructions in the mother tongue
at the primary stage of education टा हमर कोन primary stage रे कोन हबा दरकार mother tongue रे हबा दरकार गोटे कोन to the children belonging to the linguistic minority group टा हमर लिखा है आर्टिकल 350A रे union to promote spread हिंदी language को promote करिया ପାଇଁ सेतरा देइची तापरे सो दैट हम कल्चर टा कोन हमर composite culture of India सेटा गोटे express हे परिबो to claims of the members of the scheduled caste and scheduled tribes shall be taken into consideration consistently with the maintenance of efficiency of administration in the making of appointment or the service of the post of the with the affair of the union of state. The directive principles articles of the 350, 335, 358, 351 are included in part 4. Courts has been similar attention to them, meaning that all parts of the constitution would be read together. Anyways, तापरे कौन देइछि हमरो एटा आसीगला ओके हमर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जहा भी आइडिया ओवरऑल दबा कथा मु देली वर्तमान स्विच करबा इंस्टेंटली क्वेश्चन एंड आंसर्स को ओके separation of judiciary from the executive has been provided in one of the following parts of the Indian constitution seta koda amara directive principles of states policy okay sorry directive principles of states policy. Now, under the directive principles of states policy, upon what age of child they are expected to be provided free and compulsory education up to number 14 age. Which part of the Indian constitution deals with directive principles? Part 4 re. Which directive principles bears the direct impact of Gandhian moral philosophy? Gandhian moral philosophy कौन prohibition of slaughters of cows. In which one of the following is promotion of international peace and security mentioned in the Constitution of India? Seta koti amara directive principles re. Now the article of the Constitution deals with our directive principles ko kete ru kete 36 to 51. By which amendment act of the Constitution of India where the directive principles of the state's policy given precedence over the fundamental rights wherever they comes into conflict kon amara 42nd amara eta amendment no ki am padhithile na which one of the following are stated as directive principles of states policy by article 51 of the Constitution of India amar seta kon habo promote amar seti the promotion international peace and security, maintain just and honorable relations between nations, okay. तापरे कौन देइछि encourage settlement of international disputes disputes to कौन देइछि disputes by हमरो arbitration हला एड़ा सब जाक ठीक अछि हमरो तापरे पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया इज laid down under कोठी हमरो directive principles रे okay तापरे इक्वल पे ऑफ इक्वल हमर वर्क सेटा भी हमर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रे आछी तापरे देइछि द कांसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट या दिस इज आल्सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स which one of the following is not included in the directive principles आ भितर कोटा डायरेक्टिव प्रिंसिपल रे इंक्लूडेड नुहे कोन देइछि हमर प्रोहिबिशन ऑफ लिकर ओके वेलफेयर स्टेट ପାଇଁ ଦରକାର ସେଟା राइट टू वर्क equal wage for equal work right to information हमर होउची हमर fundamental right रे आछी तापर देइछि the directive principles of states policy is a check which is paid on bank's convenience who told it केटा किए कहितले B.R. Ambedkar हमर कोन हमर policy is a check which is paid on bank's convenience okay which one of the following is a directive principles आ भितर कोटा the states shall endeavor to protect and improve environment okay now question number amar kete asla 15 the principle the directive principle of state policies are kon seta non justiciable tapre the purpose of the inclusion of directive principles of states policy in the Indian constitution is to establish kono is to establish amaro social and economic democracy. Which one of the following article of the directive principles of states policy deals with the promotion of the international peace and amaro security seta kon hobo amaro 51 hobo tapare deiji amar kon deis tapare 18 ta consider the following provisions under the directive principles of states policy as enshrined in the Constitution of India seta kon securing for citizens of India a uniform civil code organizing village panchayat
ओके आमर सेटा कोथरे आछी हाँ तापर देइछि promoting cottage industries in rural securing for all the workers reasonable leisures and cultural opportunity answer will be amara habo 2 and 3 which is B okay तो आमर एटी सरी गला एटा सब पढ़ी देथिले भी आगुरु ना 8टा क्वेश्चन हमर सरी गला डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स पॉलिसी रो विथ द रिक्वायर अमाउंट ऑफ हमर डिस्क्रिप्शंस होप वीडियोटा भल लागिथिबो नेक्स्ट आमे फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़िबा which is very important also our questions guda repeatedly asked exams re so please be careful and watch all the videos ଆପଣ ମାନେ ଯଦି repeatedly ବି ଦେଖିବେ it will benefit ବାର ବାର revision କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଟା ମନେ ବି ରହିଯିବ so definitely fundamental duties directive principles fundamental rights ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ preambles schedules ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିବାକୁ କେବେ ବି repeatedly ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବେଶୀ କିଛି ଘୋଷିବା ଦରକାର ନାହିଁ repeatedly ଦେଖିଲେ ଏଟା ମନେ ରହିଯିବ with the ମୁଁ tricks ବି ଦେଇ ଦେଇଛି ଯୋଉଟା କି ମନେ ରହିବାକୁ ବହୁତ easy ହବ so this is the end of this video ହୋ ଭିଡିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ପ୍ଲିଜ ଡୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଉ ଲୁସେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଥର କହିବି ଦେଇଛି କି ଏଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୁକ୍ ଆଉ ଏଟା ଏଇ ବୁକ୍ ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଏକ୍ସାମ୍ସ କ୍ଲିୟର ହବାର 99% ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ସୋ ପ୍ଲିଜ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରିପିଟେଡ କରିକି କ୍वेଶ୍ଚନ ଗୁଡା ଦେଖନ୍ତୁ ବିକଜ ମୁଁ ସବୁ କ୍वेଶ୍ଚନ ଗୁଡାକ ଏଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହିଁ କରିଦେବି କୌଣସି ବୁକ୍ କିଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବିକଜ ସବୁ କ୍वेଶ୍ଚନ ଗୁଡା ଏଠି ଆଭେଲେବଲ ହେଇଯିବ ସୋ ବାସ୍ ଏଇଟା ହିଁ ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ଏକ୍ସାମ୍ସ ରେ ଓଏସଏସସି ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓ ଟ୍ରିପଲ ଏସସି ଏସଏସସି ଓପିଏସସି ଇଭେନ ବି ବହୁତ କାମ ଦବ ଏ ବୁକ୍ ଟା so that is बस एतिकी कहबी then do like share and subscribe my channel and thank you for watching my video keep supporting me keep encouraging me thank you so much